Hello guys, good afternoon first of all. I basically this is my first time giving a speech in my entire life, so थोड़ा सा nervous feel हो रहा है. But then bear with me. I think I will be able to give you all much more than what I came prepared for. So first of all, I would like to ask you guys, in every one of you present here, like who actually like knows me, like who? Oh yeah. So I can actually see a few hands. But the reason I'm asking this is because I feel we personally tend to listen to someone who we actually know or look up to, right? So let me first start by introducing myself. And hi, I'm Tejas and I'm an electronics engineer from DY Patil, Nerul. So basically मैंने कुछ 4 साल अपने बिताए हैं in engineering. लास्ट मोमेंट मगअप्स एंड असाइनमेंट से एक दो दिन पहले ही बस लिखना स्टार्ट करना. तो यू नो I took a few steps in the right direction at the right time, and I am feeling very proud that I'm standing on this stage right here. So before we start, I would actually like you guys, would like to ask you guys, like who is the most important person in your life right now? Like I want you guys just to take the, like just remember a name in your mind. So I know. Sorry. So now I want you guys to know or just like try to remember their contact number. Like उस इंसान का contact number जो आपके life में बहुत important है. Like without him or her, your work cannot like you can't be very efficient in your work. So how many of you guys like actually know the contact number of quite a few? I'm actually shocked. But then obviously we cannot remember 400 to 500 numbers or each of everyone of our contacts numbers, right? And the point I'm trying to make here is that we are so much dependent on our smartphone right now, because everything from our emails, from our texts, to everything we are just dependent on our phone. Well, okay, fine. Let's move on to the second slide. Yeah. So this is a photo of mine, which I had edited myself because I never got the chance to attend a convocation of myself. Since I graduated in 2020 during the pandemic, so I had a lot of fun editing this photo. But let's move on to the next. So as I asked the question, who is the most important person in our life, right? Nowadays, whenever we meet someone new, what is the first thing that we do? We usually tend to ask for someone's social media username, right? We ask, तुम्हारा Instagram का ID क्या है? Add me on Facebook. Like that, because social media is something which we are so much accustomed to right now because of the internet, because of the technology. So there might be only two reasons why we ask someone for the social ID, right, whenever we meet them. According to me, first is social media, like asking for a username or is very easy. Like कोई भी अपना username ID बता देगा, because obviously this is a very usual example, but obviously कोई एक बंदा अगर एक लड़की से अपना फ़ोन नंबर मांगता है तो वो नहीं देगी, right? Because obviously it's very कोई भी अपना फ़ोन नंबर ऐसे नहीं दे देगा, but यूज़र नेम कोई भी दे सकता है, because ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई बंदा मैसेज करेगा तो ब्लॉक कर देंगे. And the second reason is so as I said, this is the way how the world works right now, right? So technology and internet has changed the way the world is working. Where we used to like sit together with our friends, spend time, quality time, we used to run around playing on fields. Nowadays we are just like sending memes on WhatsApp groups or sending memes on Instagram groups to our friends, right? Now a few days back, basically I will give you an example. It happened in my home. A few days back I asked my brother to go and buy some groceries, and his reply literally shook me. He replied that मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि शॉपकीपर को क्या बोलना है. आई मीन द बेसिक थिंग कि लाइक यू जस्ट हैव टू गो एंड आस्क देम, लाइक आप बस वो प्रोडक्ट का नाम बता दोगे, वो शॉपकीपर आपको हाथ में लाके दे देगा. बट ही वाज सो कंफ्यूज दैट he wasn't able to like even know कि शॉपकीपर को जाके क्या बोलना है. बट आई रियली डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट, बिकॉज ड्यू टू दिस पैंडेमिक उनके जो लाइक ऑब्वियसली ही इज़ इन 8th एंड दीज ईयर्स आर काइंड ऑफ द क्रूशियल ईयर्स जहाँ पे आप एक्चुअली लोगों से मिलते हो, बात करते हो, you get a sense of what's happening around. And वही चीज़ें उनसे छीन ली गई थी, and they were just exposed to computers, smartphones and
internet. But then this lack of confidence is not only in them, but even our generation also faces this lack of confidence, because we are exposed and because we are too much we are hiding behind technology. I will give an example, but then this was just a scenario. The second thing which I go through on a daily basis is I receive a lot of DMs and lot of message request asking me कि मुझे WhatsApp हैक करना सिखाओ, मुझे Instagram के किसी के DMs पढ़ने हैं तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ. People even ask कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इफ़ माई स्पाउस और इफ़ माई पार्टनर इज चीटिंग ऑन मी. तो आई एम लाइक ये क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल हैव अ वेरी विविड इमेजिनेशन अबाउट हैकिंग एंड वो कैसे होती है, क्या होती है. लोग बस अपने अजम्पशंस निकाल के चले जाते हैं, बस मुझे दिला दो मुझे मैसेज पढ़ना है, मुझे बस दिला दो. बट दिस इज समथिंग वेरी सीरियस ऑन सोसाइटी बेसिस, बिकॉज people are hiding behind this easily available options. I mean, obviously hack करके मिलने नहीं वाला, but then the idea which they have in their mind कि ये करने से मुझे मिल जाएगा वो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा हूँ, is very wrong. I mean, rather than being in the present with their partners and talking about stuff, they are looking for an alternate option so that वो proof के साथ बता पाए कि ये देखो ये तुमने किया है. I mean, it's just an hypothetical situation, right? They don't know actually कि ऐसा कुछ हो रहा है, but they are feeling comfortable hiding behind they are afraid to go in front and talk to their partners respectively, right? So basically ये जो real life है, जो हम online देख रहे हैं, जो हम social media में देख रहे हैं, this life is, वो उनको ऐसे सपने दिखा रहा है जो उनकी real life उनको नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से the insecurity level is increasing in us, right? We see एक बंदे के पास ऑडी है, मेरे पास स्विफ्ट है, तो somehow I am the one who is at fault. Like मेरे में कुछ कमी है इसलिए मेरे पास स्विफ्ट है. But that is really not the case, right? He has a Swift, might be he might be in his 50th chapter of his life. You might be in the 10th chapter. You cannot compare. But this insecurity is building in people because of this social media, this real life which is being portrayed by people on social media, which is true. बट जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो किसी को नहीं पता होते. वेल, ऑब्वियसली आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस फॉर एवरीवन, बट इट इज़ डेफिनेटली द इशू ऑफ द आवर. बट माई क्वेश्चन इज, कैन वी ब्लेम टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग wrong with us? Well, let me tell you a story, and this might be the first time I'm going to share this in front of everyone. But generally, if I ask you, what is the age when a baby start talking? Like somewhere around 1 year. Yeah, 12 months. After 12 months, a newborn baby starts talking. Well, I was the person, I was the baby, I mean, who started talking at when I was 4 months old, right? I started talking when I was 4 months old, and it was a miracle kind of for my parents, because obviously, एक 4 महीने का बच्चा बोलने लग जाता है कुछ-कुछ, तो it's obviously a miracle. और क्या बोल सकते हैं? Well, doctors said कि ऐसा कुछ मुझसे मेरे में कुछ गलत नहीं है. I'm just developing at a faster rate, right? So suddenly I found myself topping each and every class. I was the tallest person in my classroom. I still am. But things started happening. I was suddenly I was interested in many sports, right? I like name any sport and I was playing it. बोलो basketball बोलो, football बोलो, cricket बोलो. And I was acing. ऐसा नहीं कि बस खेल रहा था. I have played nationals. I have even scored 95% plus in 12th. अब आप लोग के दिमाग में ये आइडिया आ रही होगी कि यार ये तो बचपन से ही मतलब पैदा ही ऐसा हुआ ये कि he is going to succeed, right? Right? Well, I would really like to ask any one of you, किसी के भी दिमाग में ऐसा है कि ये शायद possible नहीं होगा. I just made up a story to show कि with confidence you can do anything. I mean, obviously start में आके मैं freeze हो गया था, but I'm much more comfortable now. But then the way I said the story, the way I believed it in myself, like मैं जब story बता रहा था तो I was imagining myself in that situation and मैं उस confidence से बोल रहा था आपको. So that's why you kind of believed it. Obviously कुछ लोगों को doubt आया कि ऐसा तो possible ही नहीं है. But yeah. So my point was कि ये जो confidence building है, this won't happen if you hide behind technology, right?
ये जो मेरा कॉन्फिडेंस था, जिस यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ बोलने के लिए, इवन दो अंदर से बहुत घबराहट हो रही है, बट आई एम मैनेजिंग. सो ये एक दिन का काम नहीं था. आई पुट माई सेल्फ थ्रू सिचुएशंस जहाँ पर आई वॉज फोर्स टू टॉक टू पीपल. आई वॉज वेरी शाय. मतलब 10th तक तो मैं लड़कियों से बात भी नहीं करता था. आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं बस, मेरे 3 फ्रेंड्स थे एंड सिर्फ उनसे बातें होती थी, एंड बाकी लोगों से बस लाइक ऐसे काम की बात है कि पेंसिल दे दे, स्केल दे दे, नोट्स दे दे. बट व्हेन आई वाज इन 12th, आई एंड ऑब्वियसली बीइंग इंटरेस्टेड इन टेक, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स. आई मतलब दिन के 8-8 घंटे मैं कंप्यूटर के सामने रहता था. एवरी डे 8 hours minimum. I used to play games, I used to watch movies, everything. But when I transitioned to 11th, I made a pact to myself कि नहीं, अभी बहुत हो गया ये चुपचाप रहना, अभी बात करना स्टार्ट करते लोगों से. I forced myself to talk to people. In 2018 I joined a network marketing company. तो वहाँ पर भी लोगों से बातें होती थी, तो it gave a boost to my confidence. So I'm really proud that मैंने ये decision लिया that I stay away from technology and बस उसको bare minimum तक रखूँ जितना मेरा ज़रूरत है. Being into tech, as you can know, मतलब मैं दिन में एक आध फ़ोन तो ऑर्डर कर ही देता हूँ रिव्यू करने के लिए, उसको सारी चीज़ें करने के लिए. But then I have access to so much things around me, right? I have all kinds of smartphones. I have all kinds of laptops. So I'm engrossed into it. But उसको एक लिमिट तक रखना is a skill which we must inculcate in ourselves ताकि वो beneficial बने rather than harm you. So I started, I give myself this 10-second timer, and this is kind of the CTA I would like you all to also follow. I mean, it might not work for you, but at least try करना. So whenever I find myself mindlessly scrolling through Instagram, जब मुझे realize होता है कि यार अभी ना मतलब बहुत हो गया, I guess अभी रख देना चाहिए फ़ोन. But then sometimes what happens कि नहीं यार और देख लेते हैं, next वाला reel तो और मस्त रहेगा, and we keep scrolling. But whenever I realize कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ and I should stop, I start counting like 10 to 0 in my mind. Like 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and phone रख दिया. At least I am sharing my experience. So what that does is कि whenever I start counting 10 to 0, it gives me a sense of urgency कि मुझे फटफट 10 सेकंड में जितना भी चाहिए सब देखना है, इसके बाद में फ़ोन रखने वाला हूँ मैं. और अगले जब तक मैं फ़ोन उठाता नहीं वापस मैं उठाने नहीं वाला. If your mind is powerful, if you have that guts to put the phone down, तो आपके लिए काम कर लेगा, आप ट्राई कर लो. But then what I suggest people is use technology to reduce technology. सोशल मीडिया जो apps हैं, Instagram ले लो, YouTube ले लो, यहाँ पर ना apps के अंदर ही there are built-in features like you can set a timer. आप वो usage का time set कर सकते हो so that whenever the timer ends, that app will give you a notification that it's time to stop. It's time to take a rest. Then again, if you can follow it, then you can get rid of it. So basically, but what I'm trying to say is that there are ways where you can reduce the use of technology so that you can, put your efforts into some productive things which will, in the long term gain you results. There's this app called Forest on Play Store, and that is a superb app for productivity. So if you want to focus at some things, just download that app, and what that app does is basically, for example, if you want to focus on some things for 20 minutes, right? So 20 मिनट का जब आप टाइमर लगाते हो, that app plants a tree, एक sapling plant करता है, and as the time progresses towards the end, वो ट्री ना बड़ा होते जाता है. तो अगर 20 मिनट के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 मिनट में कुछ नोटिफिकेशन आ गया एंड आपको वो ओपन करना है, आपको फ़ोन अनलॉक करना है, तो जब भी आप फ़ोन अनलॉक करोगे ना, यू विल हैव टू किल दैट ट्री टू यूज़ द फोन. तो मतलब जितना भी वो बड़ा हुआ है, यू जस्ट हैव टू लाइक बर्न इट, एंड तभी आप फ़ोन यूज़ कर पाओगे, नहीं तो नहीं यूज़ कर पाओगे. सो दिस इज सच एन इनोवेटिव आइडिया, राइट? आई मीन मैं तो पर्सनली इतना बढ़ता हुआ ट्री नहीं मारूंगा जस्ट 10 मिनट और रुकने के लिए, राइट? आई वुड प्रीफर मैं और 10 मिनट अपना फोकस जो भी टाइम सेट किया था वो कर लेता हूँ, ट्री को पूरा बढ़ने देता हूँ, उसके बाद में फ़ोन यूज़ कर लूँगा. ऑल्सो देर आर मेनी फीचर्स इन आवर स्मार्टफोन्स, राइट? एंड्रॉयड में आपको एक डिजिटल वेलबींग का फीचर मिलता है, एंड इट इज़ इजीली अवेलेबल इन द सेटिंग्स. इफ़ यू गो टू सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन, देर इज़ अ डिजिटल वेलबींग फीचर जिसमें आप फोकस मोड सेट कर सकते हो, जहाँ पर इफ़ यू सेट अ टाइमर, लाइक आपका अगर वर्क टाइम है फ्रॉम 9 to 9,
तो आप वो टाइम के बीच में जो आपके डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स है उनको सिलेक्ट कर लेना। तो व्हाट दैट ऐप विल डू इज, सॉरी द फीचर विल डू इज, जब भी आपका जो ऐप का आइकॉन होगा ना वो ग्रे आउट हो जाएगा पूरे वो टाइम टाइम फ्रेम के लिए। तो जब भी आप उस पर टैप करोगे इट विल गिव अ नोटिफिकेशन कि आप ये ऐप यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर आपको करना ही है तो 5 मिनट का टाइमर मिलता है, 5 मिनट के लिए वो ऐप यूज़ करो एंड देन ब्लॉक। देन देर इज बेड टाइम मोड एंड स्लीप टाइम मोड फॉर एंड्रॉयड एंड iOS विच हेल्प्स यू स्लीप ऑन टाइम, राइट। अगर आप 11 बजे सोते हो तो जस्ट सेट द टाइमर टू 11 एंड व्हाट दिस फीचर विल डू इज 10 बजे से वो नोटिफिकेशंस का फ्रीक्वेंसी कम कर देगा। स्लोली स्लोली आपके जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो टोन है इट विल टर्न इट वार्म, like because the blue light filter actually affects your sleep. Sorry, not filter, the blue light which our display emits actually affects the sleep. So वो अपने display को warm tone में लाएगा so that you can sleep better. So these are some of the features which you can start inculcating so that you can stay away as much as possible from this technology and actually focus on what's in front of you. So before I go, I would really like you all to practice this because it changed my life, it changed the way I work, it changed my mentality towards everything. So start inculcating yourself, start developing your skills. I read books so that I can develop my skills. I listen to podcasts so that I get more innovative ideas. I can become a more interesting person to talk with. So find hobbies, start right now, start today, so that you can avoid the risk of living in an imaginary world. Thank you.